यार जब विन आए और हाई किल देना है फिर मजा आता है गेम खेलने में। एक तो शान ने स्किल भी बैंग्यूल लगाई है इसलिए मैं लॉबी बड़ी मुश्किल है। और ये मैं जो पैसे देके लॉबी मुश्किल बना नहीं यार ये तो बैटल पास के साथ ना ब्रो ये बैटल पास नहीं करती। उन्हें ब्लैक से सही है ये पेट हाँ ये पेट हम गरीबों को चूजे बनाने की कोशिश ना कर तू। हरमैन को क्या कहा था तूने? ऐसे गरीब सबको बना। लगता नहीं है कोई गिरा है यहाँ। नहीं कोई तो गिरा है इससे कोई तो है। पूरी टीम ही नजर आई नहीं पाते हैं। मैं डीको चेकर किसको मार रहे हो? वो है डीको की बात है। नहीं मैं देखा तेरा डाउन कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना टीम बैठी हुई है। दो पड़का दिए लोगों ने। ये आखिरी बंदा है घर से मेरा मैं ये आगे चल गया। मेरा तो आर्मर टूटा है यार बहुत दूर है। चलो 6-2 अभी तो पैसे नहीं हुए उस यहाँ पे एक बंदा है शान आवाज आ रही है। हाँ ऊपर छत पे एक छत पे है और शिप पे स्नाइपर बैठा हुआ है। अबे छत पे मेरी छत पे है। ऐसा एक ऊपर भी होगा लेकिन छत पे। अबे यार नहीं मुझे वही लग रहा था कि बंदा नीचे से आ रहा है। अब कैसा तीसरा था वो आखिरी था यार आखिरी था वो यार मैंने शान उसके पीछे लैंड करके चपड़े मारने की कोशिश की उसने मुझे पहले चपड़े मार दी। हाँ वो तो मैंने देखा मैंने जिक्र नहीं किया मैंने कहा चलो छोड़ो यार ना ब्रो कालीन के नीचे डाल दो अच्छा शान मुझे कह रहा हूँ ऊपर है मैं ऊपर चढ़ गया ऊपर मेरे पीछे नहीं आ रहा। नहीं मुझे नहीं पता तो जाके पुश कर देगा। ब्रो अभी तूने मेरे साथ इतना खेल तुझे पता नहीं मेरा स्टाइल कैसा पुश हमेशा पुश तो पता नहीं उधर ही है बॉयज उधर ही है मेरे पीछे चल तेरे पीछे बंदा है। और अगर तुम पीछे बंदे को एक्स्ट्रा कवर किया हुआ ओए Be advised, we're picking up signals from enemy
uplink stations in the area. तो उन्होंने जाके लोड आउट ले लिया वहाँ से Before मार they go रहा dark. Hostile UAV active. पीछे से एक और टीम है पीछे से एक और टीम है पहाड़ से अरे जान लोड़ा था वहाँ पे बंदा है। यहाँ पे बंदा यार हमें लोड आउट करना पड़ेगा बॉयज। अबे what the fuck? दो आगे एक डाउन है यार मैं तुम्हें नहीं, देखा मैं बहुत कहाँ दूर, बैठा मैं था, दो। उसके पीछे बैठा हुआ था। हाँ मैं उसके पीछे बैठा था उसके बावजूद उसने मुझे फायर कर दिया। शांतु कहाँ पे bro? डिटोल ले रहा तेरा भाई ठीक है निकल यार मैं उसके पीछे छुप के बैठा था उसने मुझे फायर की उसको पता नहीं मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ। 25 remaining. अच्छा अब क्या करना है लोड आउट पे कितना है? Your squad mates back on station. बताओ मुझे ये पूरी टीम वही लोड आउट की तरफ ही जाना पड़ेगा वो टीम लोड आउट ही लेकर आई है नीचे। मैं लोड आउट पे जा रहा हूँ। अगर लोड आउट पे पहुंच ले जाओ लिए। ले लो ओ ये रो ले लोड आउट ले लिया। जरा डिफेंड करो उसको लोड आउट को हमें इधर ही Friendly तू आ जा। UAV on station. हमारा उसके लोड आउट के बिल्कुल सामने एक बंदा नीचे है। माँ का I won't let you die. मैं रेस्ट कर रहा हूँ। Sniper sound. शाबाश अबे बाइक कहाँ है यहाँ ऊपर है अबे हाँ ऊपर है फक मैं वही ढूंढ रहा था। नहीं ये वाला Your team Yeah. made it to the safe zone. ये रहा Cabron, buy station here. कहाँ जाना है अच्छा ये लो Ammo here. We got an ammo box here. Hostile UAV उधर overhead. चलो चलो ये रही वो टीम Moving here. हाँ इनके लिए हाँ Friendly airstrike in the AO. Using drill drone. That uplink station is now offline. Lost our chance at that engine. Bring back your चार squad को mates आला ओ मारो यार पानी में कूद गया वो। बॉयज मेरी गन वहाँ पड़ी है अगर आप थोड़ा सा मुझे कवर दे दो। हाँ आ जाओ You have reinforcements inbound. ये This way. हाँ उसके टीममेट जो है कहते यहाँ हैं है उस वो, पे यहाँ गिरे है। पे गन मेरे कहाँ है मेरे मेरी? मास्टर से वो बाय पे गिरी है वो उस पे कहते हैं मेरे मास्टर Make it count. Hostile UAV active. जान तो कुछ और ये रहा Mierda. Hostile UAV in this sector. इसको निकलना पड़ेगा। डाउन कर दिया। Advise you head to the safe zone now. You have a lot of इसका ground तेरे to ऊपर है cover. तेरे ऊपर है। मैं आ रहा हूँ बॉयज। कहाँ पर है या वो ब्यूटी अल्लाह लड़के अल्लाह। Moving. यहाँ गिरा एक
ऐसे जाना Yeah. पड़ेगा हमें लंबा 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 लंबा। Yeah. मार Yeah, कर, मैं मार उसको कर, मार सीधा के सीधा सकता हूँ, सीधा हाथ क्योंकि पे, सीधा हाथ पे मेरे निकलो। सामने- Yeah. Hostile UAV overhead. इसमें जा रहे हैं। यो, Throwing a stun grenade! Bounty target group has been marked. Kill them all. Resurgence has been deactivated. This is the Hala. end game. Primary चलते हैं? objective complete. All targets यार यहाँ eliminated. तो Supply crates are restocked. Advise you load up now. Moving here! यहाँ घूम के जा सकते हैं तो चलो। मैं आगे चला गया। घूम के जाना है, घूम के सीधा हाथ पे। एक सेकंड। अब इधर 6000 अगर मुझे तुम लोग पैसे दे दो तो मैं यूएवी खरीद सकता हूँ। Bosnia, hostiles deployed the counter. Our UAV is orbiting the area. अबे Hostile बैग जो मैंने UAV active. पे ले ले। अंदर आ जा। यहाँ कोई ये है? जब काउंटर खत्म ढूंढने- होगी तो चलाओ। मानो भाई उस पे तलवार, उस पे फैसल भाई पे मार दिया। नहीं एक को मार दिया। अच्छा, मैं सीधा हाथ पे एक पकड़ा। टीम है हमारे, सीधा हाथ पे एक टीम है। मैंने एक को यूएवी मोटर Move to the safe zone now. अंदर आ जा, अंदर आ जा। ये जब मोटर खत्म हो गई ना मैं यूएवी उड़ाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि बाकी लोग हैं किधर। या Hostile counter UAV is active. ये काउंटर पे चढ़ पड़ी। एंड जो काउंटर पे ये चला काउंटर दिया। कहाँ तोड़ क्या है जान वाला इससे से बंदा आ रहा है। ये रहा ये। Cancel land. जान छोड़ दे, वो बहुत दूर है। ये रहे ये एक्सेस लोग हैं इससे डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। Requesting recon, flyover! हेलो बॉयज। Cover deployed! हाई ग्राउंड Moving in. Head to the safe zone now. यार बाकी कौन हमारे नीचे हैं? रहे ये रहे। या Let's get it done. बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये तो भाई ऐतिहासिक दिन है आज। Hey, what's up YouTube? How's everybody doing? Thank you for all the likes, the shares, and the follows, and the subscription onto the channel. I know the channel is growing. If you're watching this video, I'd like to hit that subscribe button and help your boy out even more. So I've been getting a lot of questions about the build that I use for Resurgence, right? So I'm going to walk you through everything, the perks, all that kind of stuff, right? So my main loadout, you say it says Resurgence right there. So for the SMG, I use the Lockman sub, right? With the Lockman sub, there's a couple of times where I use
just for fun. Sometimes I use the Veil 46, which used to be known as the MP7 in the back. But sometimes I use it, sometimes I don't. But I mainly use the locking sub. It's the meta, man. Like, you can't beat it. And I mean, you can beat it, but it's just like, if you're not running it, then you're just outgunned, man. So without further ado, right, I'm gonna walk you through the build that I use for Resurgence, right? But for the muzzle, I use the Brewing Cubic Comp, right? For the barrel, I use a Falcon. The laser, I use a VOK. I use a 40 round mag. Some people use a 30. So it has a 15 round mag? Like, why would he use a 15 round mag? Okay, it gives you sprint to fire speed, aim down sight. 15 is way too low, man. But I use a 40. Back to the logo, right? And then for the ammunition, I use the overpressure. So for the tuning, right? You use minus 0.77 on the left, plus 333 on the bottom. For the barrel, I use minus 2.1 and minus 2.2 on the bottom. VOK, no tuning on that. And then for the ammunition, I use plus 3.2, and then on the bottom I use plus 3.77. Yeah, so that's my loadout for the Lockman sub, right? Going to the ISO, right? There's a lot of people that are using the Cronin these days. I like the Cronin, but it's just the fire rate is so slow, right? Because I play on mouse and keyboard, you have to be super precise with your shots. Super precise with your shots. And because the fire rate being so slow, it just sometimes it's impossible to hit all your shots on a moving target. If the target is standing, like if it's like standing still, it's easy. You know, the dude goes down quick as hell. But if it's a moving target, yeah, you're gonna miss a couple of shots on that. And you know, that couple of shots that you miss might be the game changer. But for the ISO and Hemlock, right, I have a cool story why I use this loadout. I know some people might say, hey, you should use this and that and blah blah blah. There's a reason why I use this loadout and why I don't use anything on the ammunition. A lot of people use the high velocity, right? There's a reason why I don't use it. I'll tell you after I walk you through the whole loadout. So for the muzzle, I use a Harbinger D20. For the barrel, I use a Filter T50. For the optic, I use a Recharge DS. The reason why I use this is because it gives you more precision when you're shooting at a target instead of using the aim OP, right? Because visual is a big thing in this new Warzone, right? You know how it sits like a little bit higher than the body of the gun, right? And this one sits low. It gives you that more tighter feel when you're shooting, right? I'll show you in a little bit. So it gives you that like that tighter feel when you're shooting. Gives you that little tighter feel, so that's why I use the Recharge DX. Then for the rounds, for the magazine, I use a 45 round mag, and then the F-Tech Reaper for the underbarrel. Right, the tuning is as follows: plus 99 on the left, plus 65 on the bottom. For the barrel, I use plus 19, plus 25 on the bottom. And then for this, I use minus 194, minus 120 on the bottom. Then there's no tuning required on the magazine. And for the Reaper, for the underbarrel, I use plus 57 on the left, and then plus 26 on the bottom. And the reason why I have this build like this, right, is because I was watching a video on YouTube. The #1 ranked person in Warzone rank, that's his build, right? I use his build
because I mean, if you're number one, bro, that means you're using the right stuff, right? For me, numbers mean everything. If you're number one and you're using this loadout, there's a reason why you're using this loadout. So that's why I use this loadout. And if you're trying to find out who's number one, man, all you gotta do is like go and check. It literally tells you who's number one on Warzone, right? And then for the tactical and lethal, I use semtex and stuns. I like stuns because it slows people down. You can use it for offense, defense, both ways. Same thing goes for the lethals, man. I was using the throwing knives because, you know, as soon as you down a person, you can just throw the knife and, you know, eliminate right away. But semtex does the same thing as well. But with this, there's no, how can I word this? You just use it on people that are down, right? With the semtex, what happens, you can use it as an offense and defense, right? If you're pushing a building, you can throw it real quick, throw two of them in there, right? Throw two of them in there, and then you can just push that building. You or your teammates can push that building. With this, you're only throwing the knife at the person that is down, right? It's easy, right? But usually people, if their teammates are not around, they usually just give up, man. For the perks, I use overkill, double time, resupply. Resupply gives me that unlimited stuns and semtexes, right? So it just after time, when I'm down to like 0, it just restocks. They used to call it restock in the old Warzone. They call it resupply in this one now. So this last one, right? There's a big controversy on this last one, and the reason why I use ghosts, I'll tell you in a reason. So a lot of people like to use high alert. The reason why they use high alert is because they can know who's looking at them, right? It's understandable in a big map, but in a small map where there's like 50 people on a little ass map, believe me, you're gonna get psyched out because you're gonna get looked at in so many ways, man. You get paranoid in the end, man, because people are looking at you, and they're probably just looking at you like, hey, but you don't know where they're looking at you. It just shows you that the direction where people are looking at you, right? And the thing is, like, you just get paranoid in the end, man. So the reason why I like to use Ghost is because when your teammates go down and it pings the map for all the other people, like, so for instance, your teammate go down, right? He kills them all the way. It pings on the map where all the rest of the teammates are at, right? So if you're using the Ghost, the opponent will never know where you are at. They might know because they might know your teammates because they're not running Ghost. But the reason why you're not getting pinged is because you're running this perk, right? Which gives you a big advantage when it comes to Resurgence because they don't know where you at. So yeah. So that is my little take on how I run my things in Resurgence and all that kind of stuff. But till then, I'll add some little bit clips throughout how I use the Lockman sub and the Hemlock. But further ado, right, I'll catch you guys in the next one. And make sure, before I end this video, make sure that you guys hit the subscribe button and help your boy out. Till then, in the next one, I'll catch you guys in the next one. Take care.